We have already discussed about mozzarella cheese, which is manufactured by by a starter culture method, that is called as traditional method. मतलब we have discussed about the method of manufacture of mozzarella cheese by using traditional method, in which we are using starter culture. और जो starter culture use करते हैं उसका कौन सा था? The yogurt culture, that is Streptococcus thermophilus or Lactobacillus bulgaricus. These are the culture which has been taken in the ratio of 1:1 and used for getting the desired acidity in the curd, so that proper action of rennet can be possible. So before discussing about the another aspect of method of manufacture of mozzarella cheese, first we are using to get the acidity level in the cheese curd, we are actually using different type of acid, है ना? So that like acetic acid, citric acid, lactic acid और hydrochloric acid, these are actually food grade जो भी acid है, they are actually permitted for manufacture of mozzarella cheese by direct acid method of है ना? तो what are the advantages, why we can go for process for manufacture of mozzarella cheese by direct acid method, and another, what are the disadvantages of direct acid method? Anybody can tell what are the advantages, what are the advantages may be possible through manufacture of mozzarella cheese by direct acid method? Who will tell? Anybody else? First, note down what are the advantages of direct acidification technique of preparation of mozzarella cheese. Number one, reduce the or curtail the manufacturing time and expenses, है ना? This is the foremost advantages of direct acid method of mozzarella cheese, that is reduce the manufacturing time and expenses of the mozzarella cheese, because in case of traditional method, that is a starter culture method, we are actually keep the curd up to 14 hours to get the acidity level, or to get the acidity level high, so that we can get add the rennet into the curd. But here we can just different type of acid which are actually permitted, like acetic acid, lactic acid, hydrochloric acid, or other acid which are permissible are used for manufacture of direct acid method. तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि reduce time लगता है मेथड मैन्युफैक्चर में, और एक्सपेंसेस भी कम होता है। ये पहला मेथड पहला है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है? इन केस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, है ना, वी आर एक्चुअली क्या करते हैं? वी आर एक्चुअली एलिमिनेट द प्रोसेस ऑफ प्रोपेगेशन और मेंटेनेंस ऑफ स्टार्टर कल्चर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? वी कैन एलिमिनेट और simplified the method of manufacture of mozzarella cheese by eliminating propagation and maintenance of starter culture. If you prepare the cheese from starter culture method, तो क्या करना होता है? You can propagate the culture, then after that you prepare bulk culture, and after preparation of bulk culture they take so many times, and any lapses in manufacture in preparation of starter culture that directly affect the quality of the cheese. So in this method we are actually remove or eliminate the propagation and maintenance of starter culture, that is starter culture is not needed in this case. Another one is that एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है? In case of traditional method, it has been observed by various workers that if starter culture not getting the desired acidity or failure due to the bacteriophages, or there may be other reasons. Suppose your milk skim milk is not properly follow the instruction of method of manufacture of bulk culture, then क्या होगा? The starter culture failure either due to bacteriophages or antimicrobial agents.
है ना, इसके चलते जो है हमारा वो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए क्या है, स्टार्टर कल्चर जो करता है रिड्यूस द मतलब जो हमारा बैक्टीरियोफेजेस और एंटीबैक्टीरियल एजेंट के द्वारा जो होता है फेल्यूर, उस प्रोसेस को एलिमिनेट करता है। और सबसे बड़ा फायदा और एक और क्या है, it has also been observed in the case of direct acid method that lesser amount of rennet is required in case of direct acid method of mozzarella cheese. That is why the rennet is one of the costs which are actually involved in the method of manufacture, so that we can also further reduce the cost of production of the cheese. Another one is that direct acid method can be very much helpful in mechanization of mozzarella cheese. That is, continuous production of mozzarella cheese can be possible through mechanization if we prepare cheese from direct acid method. So these are the advantages which are inherent with the direct acid method of manufacture of mozzarella cheese. Another, what are the disadvantages of this process? The advantages of this process is that क्या होगा, सबसे बड़ा चीज क्या होगा, because in traditional method we are adding a starter culture, they contribute or attribute some characteristics flavor in mozzarella cheese. But when we prepare the cheese from direct acid method, we can get mozzarella with bland flavor. Bland flavor means you cannot perceive any type of flavor. Bland flavor, that is, they are not retaining any flavor which can be perceived. So in case of direct acid method, the flavor of the mozzarella cheese is bland. Another aspect of method of what are the other disadvantages of method of manufacture of direct acid method? There is a sharp decrease in the yield of the mozzarella cheese. मतलब जो हमारा जो मात्रा प्राप्त होता है, that quantity is also less in comparison to traditional method. So because हमने बताया था कि स्टार्टर कल्चर का एक रोल क्या होता है कि they are actually help in, है ना, increasing the moisture content in the curd. Any type of cheese, when we add higher concentration of starter culture, we get higher moisture content in the curd. When we reduce the level of the starter culture, then certainly we can get lesser amount of moisture in the curd, है ना. So here, if we are adding this one direct acid method, we can get the lesser amount of production of cheese. So these are the aspects we have to actually discuss. What are the advantages and disadvantages of the method of manufacture of mozzarella cheese? So this then how we can proceed for manufacture of mozzarella cheese. The method of manufacture is almost the same, but here we are actually using the acidification, which are actually done by the edible acid like acetic acid, lactic acid, hydrochloric acid, or any other acid which is actually permission by the FDA or FSSAI. So here we can go for selection of milk. We have already discussed that this is the only cheese which can be best mozzarella from buffalo milk. So buffalo milk is always preferred, but when we prepare the cheese from cow milk, then certain modification is actually required to get the same characteristics, texture and flavor in the curd, in the mozzarella cheese. So first of all, milk is taken, then go for clarification or filtration to remove the extraneous material of the curd of the milk, cheese milk. So once again we are heating the milk for 42 degrees centigrade, so that all the particles, all the fat globules, all the invisible material which is adhered with the fat, they are actually liberated or removed by applying clarification or filtration method. Further, then when we prepare the cheese by batch method, we can opt for LTLT pasteurization. When we prepare the cheese with the
with the large scale production, then generally we are opting for HST pasteurization method. Whatever the temperature which is permissible or laid down, that is in case of NPLT, the 63 degrees centigrade for 30 minutes or 72 degrees centigrade for 15 seconds is very recommended. Also in the case of mozzarella cheese, when we prepared from cow milk, from milk, है ना. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तुमको हमने बताया था कि if you are not if our plant is not ready for production of cheese, then we can immediate chill the milk. Immediate chill the milk. What is the purpose of immediate chill of the milk? Because when we not keep or store the milk under refrigeration, there will be chances of growth of psychotrophs. And they are बताए थे Clostridium tyrobutyrium, Clostridium tyrobutyrium और भी जो species है, they are actually causing क्या कहता है defect, that is growing defect, late growing defect in the cheese. Also has been also observed in mozzarella. So to avoid any type of defect, we are actually, or any type of growth of psychotrophs, we are actually chilled the milk at 4 to 8 degrees centigrade till further process of the manufacture of cheese. After chilling, we can acidify. We can acidify the milk, not by the starter culture, by or any other any type of starter culture. Here we can actually acidify the milk by utilizing acetic acid. अगर तुमको कॉन्क है वो सस्ता पड़ता है, तो कॉन्क से तुम कर सकते हो. तो कौन सा कॉन्क से करना है, तो 25 से 50% HCl जो है तुमको बनाना होगा. कॉन्क से तुमको 25 से 50% स्ट्रेंथ का हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है. और उसको कितना मात्रा में ऐड करना है, 2 से 3 ml, है ना. 2 से 3 ml अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो 1 लीटर मिल्क के लिए, है ना, 2 ml है सो इनफ. तो अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ hydrogen chloride to coagulate the milk. तो उसमें हम क्या करते हैं, जब हम करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हीट करते हैं. कितना पे, क्योंकि हमको क्या करना है, हीट इसलिए करना है क्योंकि तो फॉर प्रॉपर renating of the curd, some specific temperature renate can be active at a specific temperature. The best suitable temperature for renate action is 31, but they are active up to 25 to 30 degrees centigrade. So after acidifying the curd or cheese milk, acidifying the cheese milk, we can heating the milk to 28 to 30 degrees centigrade, 28 to 31 degrees centigrade, है ना. After that we are adding the renate, है ना. Here we can also opt for microbial renate. Here microbial renate, that is Mito M. pusillus, मतलब Rhizomycus pusillus variety renate is actually recommended in case of mozzarella cheese when we prepare the cheese from microbial sources. If we prepare the cheese from liquid calf renate, then the recommendation will be different. But here in India and most of the country are using microbial sources renate, that is Mito renate or Henilase or Renilase. These are the companies which are actually involved in the production of renate enzymes from microbes. And India is also importing this renate from Japan also. The two companies of Japan, Henilase and Renilase, is very much popular, and we are actually procuring that renate from Japan, which are containing the renate. That is name is the name of the fungus is, है ना, क्या नाम है, Rhizomycus pusillus lindin, है ना. तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको जो है we are actually adding at the rate of 0.5 to 0.7 gram, है ना, कितना, per 100 liter of the milk. Point should be noted, in case of mozzarella cheese we are adding the renate concentration at the rate of 0.5 to 0.75 gram per 100 liter of
milk. Whereas in case of cottage cheese or even preparation of Gouda cheese or cheddar cheese, generally higher concentration of rennet is required. Higher concentration of rennet is required. But here in mozzarella cheese, we are generally reduce the addition of rennet. So generally 0.5 to 0.75 gram per 100 liter of milk is actually recommended. But in case of buffalo milk, when we prepare the cheese from buffalo milk, we are adding the rennet at the rate of 1.25 gram per 100 liter of milk if we prepare from buffalo. But when we prepare the mozzarella cheese from cow milk, then the concentration of rennet is reduced and it has been added at the rate of 0.5 to 0.75 gram. Then the next process we can after setting of curd, after renetting the curd is allowed for set, and we can allow up to 25 minutes so that proper cutting can be take place. So after setting the curd, we allow the curd to set, and after that we can cut the curd vertically, subsequently cutting the curd horizontally also, vertically or horizontally we can cut the curd with the help of cheese knife, which are specifically designed in order to get the uniform size of the curd, uniform size and volume of the curd. So we are actually cutting the curd by this method, or after that we can increase the level of temperature of the whey और चीज मिल्क जो भी है उसको हम लोग क्या करते हैं कि 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक कुक करते हैं. क्या करते हैं? वी आर एक्चुअली कुकिंग द कर्ड for 37 to 39 degree centigrade, and after that we can drain. After that we can drain the whey. That is the drainage of whey take place during the manufacture of the mozzarella cheese, even in the preparation of mozzarella cheese from direct aging method. So after draining the curd, we can adding hot water. Then the curd is actually transferred into the hot water having temperature 80 to 85 degrees centigrade, 80 to 85 degrees centigrade. So we can transfer the cheese curd into the hot water for stretching of mozzarella cheese. That is one of the characteristics of mozzarella, that it becomes plasticized or stretchable under hot water. So we are stretching the curd under hot water having temperature 80 to 85 degrees centigrade. And after stretching the curd, we can molded the curd. After that, after getting proper stretching in the curd, we can molded the curd and it should be transferred into a brine solution. And what should be the concentration of brine solution? The concentration of brine solution is 20 to 25%, 20 to 25% chilled brine. That means the brine contains 22% of NaCl. What is the purpose of brine transfer into the brine? That is the same what we have already discussed in the method of manufacture of traditional cheese. That is the brining. When we transfer the cheese curd into brine solution, we can actually retard the growth of putrefactive bacteria, and we can also at the same time we can also increase the shelf life of the mozzarella cheese. When the concentration of brine solution is 22%. So after that we can go for packaging. Different type of packaging material has been used. You can if you simply pack the mozzarella cheese, then we can hardly get 1 week shelf life. Or if we apply vacuum packaging, then certainly we can able to check the growth of molds, and we can actually check or retard the spoilage of the mozzarella cheese. So by applying vacuum packaging, we can actually increase the shelf life of the cheese. Wrapping the cheese in parchment paper or vacuum packaging in cryopack, polythene or cellophane pouches prior to refrigerated storage greatly reduces the spoilage of mozzarella cheese.
There are several additives which has been recommended for enhancing the shelf life of the mozzarella cheese. When we apply the Delvo seed, in the manufacturing process, we can certainly increase the shelf life of the cheese. When we also adopting the process of other thing, when we prepare the mozzarella cheese and pack in polythene bags without vacuum, polythene bags with vacuum, and cryo pack has been stored successfully at temperature for 18 days, 21 days and 42 days respectively. इसका मतलब क्या है कि अगर हम बिना वैक्यूम के पॉलिथीन बैग में पैक करेंगे तो हम मुश्किल से 18 दिन तक बचा सकते हैं। अगर पॉलिथीन बैग में वैक्यूम के साथ अगर रखते हैं तो 21 से 42 दिन तक हम मोज़रेला चीज को बचा सकते हैं। या क्रायो पैक में अगर हम करते हैं वैक्यूम के साथ, है ना, क्रायो पैक में, तो वी कैन इंक्रीज द शेल्फ लाइफ अप टू 42 डेज। अगर इफ वी इम्प्लाई modified small packaging to the mozzarella cheese, we can increase the shelf life up to 6 months. That is, up to 6 months you can get the fresh mozzarella cheese, what you just prepare. So these are the different packaging method. By implying different packaging method, depending upon the availability, depending upon the method of manufacture, we can actually opt for packaging material. So we can increase the shelf life of mozzarella up to 6 months by applying modified MAP, that is modified atmosphere packaging. So now we can comes into the what are the chemistry actually involved. What is the chemistry involved in stretchability of mozzarella cheese? है ना, how the curd become stretchable, है ना. This is the cheese which is comes under the pasta filter. उसका meaning भी होता है ना, कि manufacture of cheese, Italian cheese which are stretchable, gives stretchable curd, है ना. तो इसमें क्या होता है कि मिल्क क्या है, they are in calcium rich environment होता है मिल्क में. तो मिल्क becomes, जैसे मिल्क है, we are adding rennet, we are adding starter culture, है ना. When we add both the things, we can getting the pH 5.2 to 5.4. कैसे होता है कि in calcium rich environment, calcium precipitate out of milk, है ना, calcium precipitate out of milk as a dicalcium paracasinate, है ना. When we applying starter culture or rennet to the milk, the milk become precipitate and calcium precipitate in the form of dicalcium paracasinate, जो कि curd हुआ, है ना. And when we are adding the acid or either lactic acid or acetic acid, तो क्या होता है, the calcium is actually further liberated from the dicalcium paracasinate curd. तो कैल्शियम फर्दर उससे निकल जाता है. तो क्या करता है, डाइकैल्शियम पाराकैसिनेट किसमें बदल जाता है, मोनोकैल्शियम पाराकैसिनेट में. किसमें, मोनोकैल्शियम पाराकैसिनेट में, which are stretchable at pH 5.2 to 5.3. when we further adding the acid to the curd, है ना, then the further again the calcium is actually release from the curd. That is the monocalcium paracasinate further loses the calcium when we add the acid to the curd. इस तरह से क्या होता है, फिर से कैल्शियम उसमें निकल जाता है जब, तो क्या बन जाता है, पाराकेजिनेट बन जाता है. पाराकेजिनेट आर नॉट स्ट्रेचेबल एट pH 5.2. तो यहाँ पे बहुत ही नोटिस करने वाली बात है कि जो हमारा दूध है वो कैल्शियम रिच इन्वायरमेंट में है, और जैसे ही हम उसमें स्टार्टर कल्चर और रिनेट के द्वारा जो एसिडिटी डेवलप होता है, और जनरली उसमें क्या होता है कि कैल्शियम प्रेसिपिटेट कर जाता है दूध में, इस फॉर्म में डाइकैल्शियम पाराकेसिनेट. और डाइकैल्शियम पाराकेसिनेट कर्ड जैसे ही बना
तो हम जब हम एसिड उसमें डालते हैं, चाहे वो लैक्टिक एसिड हो, चाहे वो एसिटिक एसिड हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, कोई भी एसिड अगर हम डालते हैं तो कैल्शियम आर एक्चुअली रिलीजिंग फ्रॉम द कर्ड। तो वो क्या बनाता है, मोनो कैल्शियम पाराकेसिनेट। वो क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है at pH 5.2 to 5.3. So here pH is very much important to get the stretchable curd. So if there is any variation or pH is beyond 5. lesser than 5.2 or more than 5.3, then the curd become not stretchable. So monocalcium paracasinate is stretchable at pH 5.2 to 5.3. And then when we further adding the acid either by the lactic culture or by the acid or by the any other means, we can increase further releases the calcium content from the monocalcium paracasinate. तो monocalcium paracasinate फिर अगर कैल्शियम निकलता है तो क्या बनता है, पाराकेसिनेट, जो कि स्ट्रेचेबल नहीं है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेच नहीं होता है ना। तो 5.2 pH पे वो फिर स्ट्रेचेबल ऐसो नहीं हो पाता है अगर हम ज्यादा एसिड, इसलिए ज्यादा एसिड जो हम डाल देते हैं तो कर्ड ऐसो स्ट्रेचेबल नहीं होता। So these are the beauty of this cheese, and the chemistry behind of mozzarella cheese is this, that the dicalcium, after addition of starter culture or innate, we get the curd in the form of dicalcium paracasinate, and when we adding the lactic acid or any other acid, we can losing the calcium content from the curd, that is dicalcium paracasinate, and then that converted into monocalcium paracasinate, and these are becomes stretchable at pH 5.2 to 5.3. Further, when we further adding the adding or increasing the acidity level by adding the direct acid, we can further lose the calcium content from the curd, that is monocalcium paracasinate से अगर हम lose करते हैं तो फिर क्या बनता है, वो paracasinate बन जाता है, which are not stretchable at pH 5.2. So these are the chemistry behind the stretchability of the mozzarella cheese. So now comes into the different defects of mozzarella cheese. What are the different defects we can actually get from mozzarella cheese? So hello, Vikas. हाँ, so what are the different defects actually we are actually observe in mozzarella cheese? आवाज नहीं जा रहा है? आ रहा है सर। अरे तो बोलो तो कम से कम, हमें लगा कि कुछ आवाज नहीं जा रहा है तो मैं सोचा कि क्वेरी कर लूं एक बार। जा रहा आवाज? एवरीबॉडी हियर माय सॉन्ग? विकास, वंदना? हाँ सर, आ रहा है। आ रहा है। तो अब हम लोग जो है सो डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट डिफेक्ट्स इन मोज़रेला चीज। एक मार्बलिंग डिफेक्ट होता है, क्या होता है मार्बलिंग, MARBLING, मार्बलिंग डिफेक्ट होता है मोज़रेला चीज में। ये है सो क्यों होता है, इसका कारण मेजर जो क्या है कि हम लोग या तो वाटर का टेम्परेचर जो स्ट्रेचेबिलिटी के लिए जो करते हैं, या तो वाटर का टेम्परेचर जो हमने बताया कि 80 से 85 होना चाहिए, या तो वाटर का टेम्परेचर कम होता है, या जो कर्ड होता है उसकी एसिडिटी कम होता है ना। तो इसलिए उसमें मार्बलिंग में क्या होता है कि इनकम्प्लीट स्ट्रेचिंग, मतलब पूरा स्ट्रेचेबल नहीं होता है। जो हमारा कर्ड होता है मार्बलिंग में वो पूरा स्ट्रेचेबल नहीं होता है। इसका रीजन क्या है, या तो हॉट वाटर का जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड चाहिए वो नहीं होता है, या हमारा कर्ड में एसिडिटी जो है बहुत ही कम डेवलप हुआ है, इसके चलते ये डिफेक्ट जनरली मोज़रेला चीज में आता है। सो हाउ वी कैन एक्चुअली चेक, we can check this defect by applying proper hot water temperature, and also हमने बताया कि at a specific pH 5.2 to 5.3 पे ही मोनोकैल्शियम पाराकेसिनेट जो है स्ट्रेचेबल होगा। So that is why we have to keep the acidity level which is desired for the mozzarella cheese. उसके बाद क्या होता है इसमें जो मेजर डिफेक्ट होता है एक और, पुअर मेटाबिलिटी। पुअर मेटाबिलिटी में क्या होता है, ये इसलिए होता है पुअर मेटाबिलिटी इसकी, क्योंकि अगर हम व्हेन वी ट्रांसफर द चीज मोज़रेला चीज इनटू ए हाई कंसंट्रेशन,
salt of high concentration, जैसे हमने 22% में रिकमेंड किया कि 22% में ट्रांसफर कर दो, तो we can keep the curd up to 14 days if without vacuum. वैक्यूम में करेंगे तो हमारा 21 दिन और 42 दिन तक हो सकता है, लेकिन हमारा पुअर स्टेबिलिटी आने का अगर हम कर्ड को 26% ब्राइन सॉल्यूशन में डाल देंगे तो वी कैन ऑब्जर्व पुअर मेटाबिलिटी. दैट इज व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट शुड बी ऑप्टिमम इन द केस ऑफ मोज़रेला चीज. जनरली 22% इज एक्चुअली जनरली कंसीडर्ड बेस्ट फॉर मोज़रेला चीज. उसके बाद एक आता है डिस्कलरेशन. डिस्कलरेशन क्या होता है? अगर हम साल्ट की मात्रा when we transfer the mozzarella cheese into a high salt concentration, then the curd becomes the curd of the mozzarella cheese, which is which we prepare from buffalo milk. It is chalky white in color. When we prepare it from cow milk, then we can get yellowish color. So when we transfer the curd into a high concentration salt, then it becomes discolor. So to avoid the discoloration of mozzarella cheese, generally optimum temperature of optimum concentration of salt is recommended. That is generally 21 to 22%. Another defect क्या होता है? योगर्ट डिफेक्ट. कौन सा डिफेक्ट? योगर्ट फ्लेवर जो होता है, योगर्ट फ्लेवर डिफेक्ट आता है कभी कभी मोज़रेला चीज में. ये क्यों आता है? Because when we adding the starter culture in higher amount, there may be chances of production of acetaldehyde. Because हम यहाँ पे जो कल्चर यूज करते हैं मोज़रेला चीज बनाने में, वो हम कौन सा कल्चर यूज करते हैं? योगर्ट कल्चर. दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस. ये हम लोग यूज करते हैं. और इसमें जो योगर्ट का जो फ्लेवरिंग कंपाउंड क्या कौन सा होता है? एसिटाल्डिहाइड होता है. तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन जब ज्यादा होता है तो मोज़रेला चीज है ना, हमारा फ्लेवर योगर्ट फ्लेवर डिफेक्ट उसमें परसीव. दैट इज व्हाई वी हैव टू ऐड द कल्चर विथ स्टार्टर कल्चर विथ देयर बेस्ट एक्टिविटी. मतलब जो स्टार्टर कल्चर जो हम लोग लें, वो हम लोग जो एक्टिविटी टेस्ट बताया है कि स्टार्टर कल्चर का एक्टिविटी टेस्ट जो हम लोग करते हैं, जिसमें बताया था कि स्टार्टर कल्चर अगर हम जो यूज कर रहे हैं चीज बनाने में, उसकी जो है एक्टिविटी जो है 90% आना चाहिए लैक्टिक एसिड, है ना. जो हम कर्ड का एसिडिटी जो चेक करेंगे उस पे जो उसका लैक्टिक एसिड आना चाहिए वो 90% से ज्यादा आना चाहिए. तो उस तरह के कर्ड को हम यूज करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें इस तरह का कल्चर डिफेक्ट जो योगर्ट फ्लेवर डिफेक्ट है जो मोज़रेला चीज में, वो नहीं आएगा. इसके अलावा ब्राउनिंग डिफेक्ट एक आता है जो पिज्जा टॉप में देखने को मिलता है ना. तो ये जनरली है यूज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस जो हम यूज करते हैं, दैट डू नॉट फर्मेंट गैलेक्टोज, है ना. तो ये गैलेक्टोज जो होता है दूध में, उसको है सो जो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस है उसको डिग्रेड नहीं कर पाता है, जिसके चलते हमारा ब्राउनिंग डिफेक्ट पिज्जा टॉप पे जो है वो पाया जाता है. इसके अलावा जो अदर डिफेक्ट है, एबनॉर्मल गैस फॉर्मेशन, एबनॉर्मल गैस प्रोडक्शन हो जाता है ना. चेंजेस इन टेक्सचर एंड अरोमा हो जाता है मोज़रेला चीज में. मोज़रेला चीज जो पुराना वाला देखोगी तो उसमें क्या होता है कि गैस प्रोडक्शन में होता है, साथ साथ टेक्सचर और अरोमा में भी एबनॉर्मलिटी आता है. वो किसके चलते आता है? प्रोपाइनी बैक्टीरियम के चलते. प्रोपाइनी बैक्टीरिया का ग्रो हो जाता है, जिसके चलते हमारा गैस फॉर्मेशन होता है. प्रोपाइनी बैक्टीरिया जो स्विस चीज में हम लोग अलग से कल्चर के साथ ऐड करते हैं, here there is any formation of gas in the mozzarella cheese that comes under category of defect. So Propionibacteria growth should be avoided during manufacture of mozzarella cheese. उसके बाद हम लोग का पिगमेंटेशन, होल फॉर्मेशन, टेक्सचर चेंजेस ऑफ फ्लेवर एंड एरोमा इन डायरेक्ट एसिड चीज. हम लोग का डायरेक्ट एसिड चीज में खास करके इस तरह का प्रॉब्लम आता है. क्यों? क्योंकि अगर हम सीडोमोनास, एग्रोबैक्टर, एसिनोबैक्टर, साइट्रोबैक्टर, इंट्रोबैक्टर, है ना, these are the bacteria generally actually responsible for pigmentation, hole formation of flavor defect and aroma in direct acid cheese. So how we can check? हमने बताया कि it can be checked when we use the milk, when we collecting the milk, and after pasteurization and other process we can chill the milk, so that this process, these type of defect will be avoided.
इसी तरह से हम लोग का सुपरफिशियल रेड ब्राउन मार्क्स आ जाता है, कभी कभी प्यूट्रिड मतलब सड़ा हुआ स्मेल आता है, या डिस्टिंक्ट बिटर फ्लेवर भी आता है। कभी कभी मौजूदा चीज में है ना बिटर फ्लेवर भी परसीव होता है। ये सब ऑलरेडी तुमको पता है, जो भी प्यूट्रिड फ्लेवर आता है या फिर सड़ा हुआ गंध जो आ रहा है, ये सब किसके चलते होता है? साइकोट्रॉप्स। साइकोट्रॉप्स में भी स्यूडोमोनास प्यूटिडा है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है, इसके चलते ये डिफेक्ट जो है परसीव होता है। सो that is why we are actually recommending the immediate chilling of milk when we use for preparation for mozzarella cheese. So this can be avoided by implying immediate chilling of the raw milk for cheese manufacture. इसके अलावा क्या होता है, जो हमारा चीज मोज़रेला चीज होता है उसका एक बॉडी जो होता है क्या होता है? स्ट्रेचेबल होता है, थोड़ा सा स्टिची होता है, प्लास्टिसाइडी इन नेचर होता है। लेकिन क्या होता है कि समटाइम जो मोज़रेला चीज तुम देखोगे वो पुअर स्लाइसिंग हो जाता है, मेल्टिंग नहीं करता, सॉफ्ट बॉडी हो जाता है, जिसके चलते पूरा प्रॉपर स्लाइसिंग नहीं होता है ना, और मेल्टिंग नहीं होता पिज्जा बनाने में या चीज में। इसका मेजर रीजन क्या है? बिकॉज वन स्टार्टर एग्जेंट that is lactobacillus gazzei are actually है ना actually attack or get into favorable condition for their growth। तो lactobacillus gazzei के द्वारा इस तरह का डिफेक्ट परसीव होता है। so we can avoid the any type of contamination or any type of post contamination during manufacture of mozzarella cheese. So these are the defects we can actually generally perceive in the case of mozzarella cheese. Either we prepare from direct acid method or from traditional method, that is a starter culture. So in both the case we are actually getting the such type of defect. And so but the growth of this cheese is very high, not only in India but also other parts of the world. But in in India it is going at the rate of more than 6%. So this type of cheese can be prepared at cottage level. So several entrepreneurs of various success story are actually in picture in the country. So we can also prepare mozzarella cheese at small scale level, and when it can be easily consumed by the market. Either they are a Pizza Hut or Pizza Domino's, they are actually demanding such type of cheese regularly. So the prospects of such type of cheese is very high in coming days, and day by day this type of cheese production is very high. So these are the aspects we have to discuss today. Have you any query? Hello, have you any query? अक्षय? नहीं सर। हाँ जी। नहीं सर। हाँ, और कोई किसी तरह का इसमें कुछ डाउट वगैरह कुछ पूछना है? तो इसका पीपीटी दे दीजिएगा सर। अच्छा, पीपीटी तो भेज देंगे। कॉटेज चीज का मिल गया था ना सबको, है ना? कॉटेज चीज का मिल गया था। अच्छा, आज समय नहीं दिखा रहा है, नहीं तो हमें तो डर लग रहा था कि समय आ जाता है ना, कि समय पूर गया तो छोड़ना पड़ता, पहले आ जाता था। सर मेरे पे दिखा रहा है सर 47 मिनट हो गया सर। कितना मिनट? 47 मिनट। 47 मिनट हो गया? यस सर, 48वां चल रहा है सर। टाइम से अनलिमिटेड कर दिया है। अच्छा, have you any query about mozzarella cheese when you prepared either by direct acid method or by traditional method? Have you any query? We have already discussed the method of manufacture, what are the advantage disadvantage of direct acid method, what are the different defects either we prepare from direct acid method or by traditional method. So we have discussed all the aspects, है ना? If you have any query you can ask. कोई नहीं चाहिए ना? कुछ पूछना है? चलो ठीक है। रवीश? यस सर। Have you any query? हाँ, हमने केमिस्ट्री भी बता दिया कि व्हाई मोज़रेला चीज इज स्ट्रेचेबल। उसमें किसी को कुछ पूछना है? ठीक है।
चलो, let us end the meeting. No, sir. Okay, just leave the meeting.